कीर्केगार्ड ने 1843 में 2 Upbuilding Discourses पब्लिश किए, जिनमें से ये दूसरा डिस्कोर्स है जिसका नाम है एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम अबव. इट स्टार्ट्स विद द बिब्लिकल वर्सेस. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begat us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. ये डिस्कोर्स जो है एवरी गुड एंड परफेक्ट थिंग इज़ फ्रॉम अबव, ये सेकंड नंबर पे इस किताब में कीर्केगार्ड ने इंटेंशनली पुट किया है, क्योंकि पहले डिस्कोर्स में द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ के अंदर वो बात करते हैं अबाउट हैविंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ एंड दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ इज़ विक्ट्री. और अब इस सेकंड डिस्कोर्स में वो बात कर रहे हैं अबाउट अ क्रिश्चियन हु ऑलरेडी हैज़ फेथ, who already has read his first work, his first discourse, which is the expectation of faith. Kierkegaard टाइम वेस्ट नहीं करता in describing what faith is, और वो डायरेक्टली इस बात पे आ जाता है कि what is the expectation of faith, how to have faith and what to do once you do have faith. वो Fear and Trembling में faith के बारे में लिखता है, even if someone were able to transpose the whole content of faith into conceptual form, it does not follow that he has comprehended faith, comprehended how he entered into it, or how it entered into him. Kierkegaard के लिए faith एक outer good नहीं है. It is for the inner man, it is for the single individual, जिसको वो address करता है as my dear reader. He says the following in concluding unscientific postscript. In the godly discourse about faith, the main point is that it informs us how you and I, that is, single individuals, become believers, and that the speaker helps tear us out of all illusions and knows about the long and laborious way and about relapse. We sit in church and observe what faith is capable of doing, not as believers but as spectators of the achievements of faith. Just as in our day we do not have speculative thinkers but spectators of the achievements of speculative thought. But for the theocentric, speculative, and objective age, it is, of course, more likely, far too little, to become involved in the ultimate difficulties, where the question ultimately becomes as sharp, as penetrating, as disturbing, as uncompromising as possible about whether the individual, you and I, is a believer and about how we relate ourselves to faith from day to day. कीर्केगार्ड फिर कहता है कि ये मानना एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए इनिशियली बहुत मुश्किल होता है कि इज़ गॉड गुड और डज ही वांट द बेस्ट फॉर अस, और हम कोशिश तो कर सकते हैं टू मेक आवर विशेज़ हिज विशेज़, लेकिन वो कहता है आई वुड हैव बीन वीक इनफ टू मेक हिम जस्ट एज वीक, देन आई वुड हैव लॉस्ट हिम एंड माई ट्रस्ट इन हिम. फिर वो फेथ को बेहतर समझने के लिए ये पूछता है, इज़ देयर जॉय इन हेवन, ओनली सॉरो ऑन अर्थ, और ओनली द न्यूज़ दैट देयर इज़ जॉय इन हेवन? डज गॉड इन हेवन ब्रिंग आउट द गुड गिफ्ट्स एंड ले देम फॉर अस इन हेवन सो दैट वी कैन रिसीव देम सम टाइम इन द हियर आफ्टर? वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सारी बुरी चीज़ें यहाँ दुनिया में और सारी अच्छी चीज़ें जन्नत में इन द हेवंस, या फिर इट इज़ सम काइंड ऑफ अ टेस्ट, और आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट हियर ऑन अर्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट इन द हेवंस. जिस तरह उसने लास्ट डिस्कोर्स में कहा कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेथ इज़ विक्ट्री, वो यहाँ पे ही बात कर रहा है कि हैविंग फेथ दैट एवरी गुड एंड परफेक्ट थिंग इज़ फ्रॉम अबव वुड मीन दैट यू हैव फेथ दैट एवरीथिंग फ्रॉम अबव, एवरीथिंग फ्रॉम गॉड इज़ अ गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट. वो यहाँ ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि रादर देन परसीविंग थिंग्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई इवेंट, कोई सर्कमस्टांस खुदा ने आपकी तरफ भेजा है तो उसको एज गुड और बैड अपनी टर्म्स पे कंसिडर करने के बजाय यू शुड कंसिडर एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड अ गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट. एंड रादर देन ट्राइंग टू मेक योर विशेज़ हिज विशेज़, you should make his wishes your wishes, so that you submit and that you see everything coming from him as a good and perfect gift. वो कहता है God makes good and perfect gifts for anyone who has heart enough to be humble. फिर वो उन लोगों की बात करता है जो इस biblical verse को नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाते. वो कहता है they let their thought for a moment occupy itself with the words, and then they said, now we have understood them, bring us some new thoughts which we have not understood. Nor would they have been wrong, for the apostles' words are not difficult,
and yet they proved thereby, and that after having understood them, they wished to abandon them, that they had not understood them. फिर वो कहता है कि काफ़ी इंडिविजुअल्स परवर्ट करते हैं खुदा के गुड गिफ्ट्स को टू देयर ओन डेट्रीमेंट, और जैसे उनकी एक विश फुलफिल होती है दे जंप टू अनदर विश, दे स्टार्ट प्रेइंग फॉर सम अदर थिंग विदाउट इवन रिमेंबरिंग टू से थैंक्स टू गॉड फॉर द फर्स्ट विश. वो फिर कहता है कि इट शुड बी दिस वे कि आप को ज़रूरत ही ना पड़े विश करने किसी चीज़ के लिए, बिकॉज वट एवर गॉड सेंड्स योर वे यू एक्सेप्ट दैट एज अ गुड एंड परफेक्ट थिंग. वो कहता है is then the apostolic word that every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, a dark and difficult saying. And if you believe that you cannot understand it, dare you assert that you have wished to understand it? If you doubted whether it came from God or whether it was a good and perfect gift, have you dared to make the test? And when the easy play of happiness beckoned you, have you thanked God? And when you were so strong that it seemed as if you needed no assistance, have you thanked God? And when your allotted share was small, have you thanked God? And when your allotted share was suffering, have you thanked God? And when your wish was denied you, have you thanked God? And when you must deny yourself your wish, have you thanked God? And when men did you wrong and offended you, have you thanked God? We do not say that the wrong done you by men, thereby cease to be a wrong, for that would be an untrue and foolish speech. Whether it was wrong, you must yourself decide. But have you referred the wrong and the offense to God, and by your thanksgiving received it from Him as a good and perfect gift? Have you done this? Then surely you have worthily interpreted the apostolic word to the honor of God, to your own salvation. For it is beautiful for a man to pray, and many promises are held out to the one who prays without ceasing, but it is even more blessed to return thanks. Then have you worthily interpreted that apostolic word more gloriously than if all the angels spoke in glowing tongues.